Good morning, students. How are you? I hope all are fine, all are safe and healthy at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue our chapter 1, My Body. In my previous video, we have discussed about the digestive system. And now, in this video, we will discuss the first part of digestive system through which we eat our food. So the first organ that is used in digestive system is mouth. Students, ask your friend to open her mouth and observe it carefully. You will be able to see different types of teeth and tongue in the mouth. Teeth and tongue. What you will observe in the mouth of your friend? That there is tongue and teeth in the mouth. Okay, students. So today we will discuss about teeth that are present in your mouth. Okay, students. So let's start. Teeth. Teeth are a very important part of our mouth. Teeth help to bite and chew the food. Teeth help to bite and chew the food. Teeth क्या हेल्प करते हैं? फूड को बाइट करने में, मीन्स कट करने में, और उसको च्यू करने में. च्यू मीन्स चबाना, चबाने में हेल्प करते हैं. They also give shape to our face and help us to speak clearly. Students, teeth give shape to our face and help us to speak clearly. Okay, now we have two sets of teeth in our life. A baby is born with no teeth. जब बेबी का जन्म होता है, बेबी बॉर्न करता है, तो उसका कोई टीथ नहीं होता. ओके, अ बेबी इज बॉर्न विथ नो टीथ. व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months old, her teeth begin to appear. By the time the baby is 3 years old, she has a set of 20 teeth. These are temporary and are called milk teeth. स्टूडेंट्स, जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी का जन्म होता है, न्यूली बॉर्न बेबी जिसको बोलते हैं, उसका कोई टीथ नहीं होता. बट जब बेबी 6 month का हो जाता है, तो उसके छोटे छोटे टीथ दिखने शुरू हो जाते हैं. ओके, एंड व्हेन शी बिकम्स 3 years old, जब तक वो 3 years old का होता है, 3 years का हो जाता है, तो उसके माउथ में 20 टीथ आ जाते हैं. एंड दीज आर टेम्परेरी एंड और कॉल्ड मिल्क टीथ. और उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ. मिल्क टीथ मीन्स दूध के दांत. ओके, एंड स्टूडेंट, आफ्टर सम टाइम दीज टीथ ब्रोक डाउन. ये जो टीथ हैं, दूध के दांत, मिल्क टीथ, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं. ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं. दैट्स वाई दीज टीथ आर नोन एज टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी टीथ मीन्स जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं. ओके, उसके बाद वो टूट जाते हैं. क्लियर? सो मिल्क टीथ आर नोन एज टेम्परेरी टीथ. ओके, एंड हाउ मेनी नंबर? Milk teeth are 20 in number. Milk teeth are 20 in numbers. Now, between the age of 6 and 12 years, the milk teeth fall out one by one and new ones grow in their place. जब
बच्चे की एज 6 से 12 ईयर्स तक की होती है, 6 to 12 ईयर्स के बीच में वो टीथ वन बाय वन टूट जाते हैं, ओके और उनके प्लेस पर न्यू टीथ आ जाते हैं एंड दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड दे आर 32 इन नंबर। जो न्यू टीथ ग्रो करते हैं दैट आर नोन एज परमानेंट टीथ एंड दे आर 32 in number. Okay students, so in our life we have two sets of teeth. First is milk teeth. These are also known as temporary teeth. Milk teeth means दूध के दांत. Temporary, why we call the milk teeth temporary teeth? Because these are for short time period. कुछ समय के लिए होते हैं. That's why milk teeth are known as temporary teeth. And these milk teeth are 20 in numbers. And after milk teeth, we have permanent teeth. And these permanent teeth are 32 in numbers. Okay. Now have a look. This is a picture of tooth present in your mouth. Okay, this is one type of tooth and this pink part is known as gum. Okay, this pink part is known as gum. Okay, this pink part जिसको हम बोलते हैं मसूड़े. ओके आप अपने माउथ में देखिए, आपको माउथ में नज़र आएंगे जब आप मिरर में खड़े हो जाएंगे तो आपके टीथ जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर गम होते हैं. ठीक है, मसूड़े. क्लियर. नाउ द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ, दिस इज द विजिबल पार्ट जो आपको मिरर में नज़र आएगा. ओके, दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ एंड दिस विजिबल पार्ट इज नोन एज क्राउन. This visible part is known as crown. जब आप मिरर में सामने अपना माउथ ओपन करेंगे तो आपको टूथ नज़र आएगा और जो टूथ का पार्ट जो आपको ऊपर से नज़र आता है दैट इज नोन एज क्राउन. ओके एंड दिस पार्ट इज इनसाइड द गम. और टूथ का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये गम के अंदर होता है, मसूड़ों के अंदर होता है, जो विजिबल नहीं होता, जो हमें दिखाई नहीं देता. ओके, टूथ गम्स में फिक्स किए हुए होते हैं, ये गम में फिक्स हो जाते हैं, मसूड़ों में फिक्स हो जाते हैं. एंड दिस लोअर पार्ट इज नोन एज रूट ऑफ द टीथ. Okay, so students, visible part of the tooth is crown and the invisible part जो हमें दिखाई नहीं देता, the invisible part is known as root of the tooth. Okay students, clear to all? Now we will study about the types of teeth. First are flat teeth. Flat teeth means the teeth that are present in the front of our mouth and these are flat. 1, 2, 3, 4 front teeth. These are known as flat teeth. These 4 teeth are known as flat teeth. They are known as incisor. They are known as incisor and these are used for biting and cutting the food. Food को कट करने के लिए यूज होते हैं. These first 4 teeth 1, 2, 3 and 4 front teeth. These are flat and front teeth. Flat and front teeth of the mouth and these are known as incisors. Okay, we have 4 incisor in the upper jaw. jaw means जबाड़ा जिसे हम बोलते हैं, हमारे माउथ में जहाँ पर हमारे टीथ होते हैं. तो upper jaw. Okay, 4 incisor in upper jaw and 4 incisor in lower jaw. We have 4 incisor in upper jaw and 4 incisor in lower jaw. So students, total flat teeth are 8 in number. 4,
plus 4, then we have 8 in numbers. Okay, these flat teeth are 8 in numbers. 4 plus 4. Okay, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. Clear? Now next are pointed teeth. On the either side of flat teeth is a sharp pointed teeth. Flat teeth के दोनों साइड पर. Okay, this one and this one. Okay, and here also this one and this one. जो फ्लैट टीथ है उसके दोनों साइड पर 1 पॉइंट टीथ होता है, 1 पॉइंट टूथ होता है. सो दीज आर 4 इन नंबर्स. 1 2 3 4. 2 in upper jaw, 2 lower jaw. These are 4 in number and these are very sharp pointed teeth, and these teeth are known as canines. Okay, canines, and these teeth are used for tearing the food. Food को tear करने के लिए use होते हैं. So pointed teeth are 4 in number. These are sharp and these pointed teeth are known as canines, and these teeth are used for tearing the food. Now next are broad and grooved teeth. Broad and grooved teeth. The teeth present at the back of the mouth, जो हमारे माउथ के बैक में होते हैं. These back side and same back side. Upper jaw, these back side and these back side. Okay, so these are broad and have grooves in them. They are used for chewing and grinding the food. Food को chew करने में, चबाने में और उसको grind करने में, अच्छे से पीसने में help करते हैं. They are known as molars and premolars. Broad and grooved teeth को हम क्या बोलते हैं? Molars and premolars. And there are 8 premolars in all. 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. So students, we have total premolars. Premolars. How many premolars we have? 4 in upper jaw, 4 in lower jaw. These are premolars. These are premolars. जो pointed teeth के side में होते हैं, that are premolars. Pointed teeth के साथ में जो होते हैं, that are premolars. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. And 4 plus 8. Okay, now next are molars. Molars come after the premolars. Premolars के बाद last one are molars. Okay, 3 3. Here also 3 3. Okay, 6 in upper jaw, 6 in lower jaw. Clear? So there are 12 molars in all. 6 in upper jaw, 6 in lower jaw. So students, we have 8 numbers of premolars and we have 12 numbers of molars. So total 8 plus 12 are 20. So students, we have 20 molars and premolars. We have 20 broad and grooved teeth in our mouth, and these 20 teeth are used to chew and grind the food. Food को chew करने में और उसको grind करने में use होते हैं. Okay students, so that is all about the types of teeth. I hope all of you have understood. Students, you have to read these types of teeth from your science book very carefully. Okay students, and also you have to draw the diagram of this tooth in your practical science notebook. Okay, you have to write down this diagram and you have to write down the 2 sets of teeth, milk teeth and permanent teeth, in your fair notebook of science. Okay students, it's your homework. Thank you. Have a nice day.